how Pakistan is doing, especially in the international market, what challenges we are currently facing, and how we can improve our accounting services export specifically. So let's start with your introduction. Why don't you tell me something about yourself? My name is Syed Haseeb. You know, I am a Chief Consultant of Professional Plus, and I have completed my bachelor's from Karachi University. And I am fellow member of Association Chartered Certified Accountant, that is ACCA. And I am also the fellow member of Institute of Public Finance Accountant, Institute of Financial Account, and Institute of Public Finance Accountant, Australia. These qualifications are multiples and obviously are providing strong support to me while approaching new clients and dealing with the existing clients. Okay, so I have please continue. 16 years of experience in audit, finance, and fraud investigation, especially in banking and manufacturing industry, because my past experience was in banking. Okay, so can you tell me about Professional Plus, something about the company? Professional Plus established in 2011, and we started as consultancy services, and we provide accounting, auditing, taxation services, and we also deals in software, accounting software especially, or HR level payroll softwares. A Professional Plus is also a approved ACCA employer and ICMAP employer at a gold standard level. And we are around 7 active clients right now, and 15 employees we are working that are on our payroll. Okay. So do you provide these services locally, or do you export or outsource services? Mostly we provide locally business, but also we provide offshore accounting services to US level. We also have the same pattern level of accountant that are sitting in USA, and we provide recruitment services to them, or offshore accounting services to them, or bookkeeping level of services to them. This is this season that tax accounting, tax return season started in US from March to May till. Okay. It is So it is a hot season for US accounting base. okay. So what percentage would you say you export, and what percentage do you provide locally? We can say in terms of amount or revenue, it will be 70%, and in terms of a client, it is a 20%. Okay. Okay. So if we move on to accounting services inputs, what inputs do you think are required for a vibrant accounting profession? An accountant needs many skills to be successful. It is not just amount and numbers to correct number or format reports. I personally would like to highlight a few that skill or main inputs that provide by accounting profession. First of all, we should take effective communications, which is very important. It is necessary to have interpersonal skills such as communication and working with other pupils, colleagues, and even leaders. Most accountants don't focus much on soft skills. That is the main drawback. If effective communication is a vital accounting skills required for success, especially if you are a startup and you are going to start your career, that you might have to handle a lot of different aspects of your work along with accounting, auditing, taxation, and dealing with your leaders or a boss. And good communication skills will help you in more ways than you think. And that's another, we can say, a mathematics or software skills, because it is very important to have a knowledge of accounting software, ERP as well. In past, we have a long registers to make a bookkeeping in ledgers and cash balance, but we have an accounting softwares as well, and it should be integrated with the accounting skills as well. For example, integrating with inventory management softwares with accounting system, we have to ensure that all purchases, orders, and there are very much links resulting in more accurate financial reports. Some of the essential softwares like a QuickBook,
peach tree that we are using for the USA-based accounting clients. It is very important to have a knowledge of these accounting software, and I strongly recommend for the new students or a fresh accountant to have a knowledge of software knowledge for especially for cloud-based accounting. Then we all have another import as well, like negotiation skills, because negotiation is also a very vital role or inputs that play a vital role to performing an accounting jobs. For example, discussing budgets and dealing with banks and client payments. If a good use of negotiation skills can secure some of the best long-term relationships. Knowledge of data analysis is another example, and a critical thinking, problem solver, behave like or work like a problem solver. It's also a very important factor that should be have in accountant professions. For example, today business are looking for problem solvers, not an accountant or a number crunchers. They want to have a people who can analyze different situation and create solutions for them. Critical thinking is the ability and should have in the accounting professions. Okay, so you mentioned two things, like soft skills, communication, negotiation. If we focus on that right now, do you feel that these skills are present in the accounting professionals of our country? And if they're not, how do you think we can improve them? First of all, we also have numbers of accounting bodies, ACCA, ICMA. They are providing much rich knowledge of accounting and skills. But I think there should these skills and knowledge should be polished by only three factors or three inputs. We can say Excel-based professional accounting profession should have a knowledge of advanced Excel level. It should have English speaking level or a computerized accounting software. So these skills, if we have in accounting profession, that the growth chances will be 500 or 200% will be available. So yeah, coming on to technology, you mentioned accounting softwares and the need for accounting for professionals to know how to use these technologies. So do you think that Pakistan is equipped to deal with the changes that we have seen in the past, that, you know, pehle manual hoti thi accounting, now it's turning to more towards computers and cloud-based accounting. So do you think that Pakistan is able to deal with these changes? बिल्कुल बिल्कुल पहले जो है अकाउंटिंग जो है वो मैनुअल होती थी, हर जगह ही होती थी, and there are many softwares that we are developing in Pakistan. Karachi and Lahore are the main cities that are developing main accounting softwares, and we have to learn these softwares. And for example, if newcomers or new accounting professions or new students come into the market, they must have aligned with the technologies, because it is the main source of success in accounting profession as well, and all other profession, especially in service sectors. In past, we have a calculator, and we have an MS-DOS level accounting, Visual Basic, QW Basic, GW Basic level accounting. Then we are also developing an ASP.NET level. We all these languages हैं, ये जो है update होना जरूरी है. We have to learn these languages, or especially what are background, what are working in background in the software. We have to learn these activities as well. Okay, so that's a big factor. Even now, different add-ons are also developed for smart accounting and reporting, and minimize the risk of wrong decision making as well. For example, we also have a CISA. Do you know CISA? CISA is a Certified Information System Auditor. It's qualification, which name itself shows that how much technologies are being used for these audits. It's same name Certified Information System. It means that there are certain numbers of technologies that are back support to these qualifications. Okay, so Pakistan is. Do you feel that Pakistan is
coming up to par with these technology standards. Okay, so if we talk about compliance standards, do buyers of accounting services require stringent compliance standards? Compliance standards. Compliance standards means what the buyers required from the accounting professions. Obviously, buyers assume that services from qualified accountant will be highly standard, and he expects great inputs from accountant or accounting service provider that help them to make good strategic and financial decision. And for example, if we take a professional code of conduct of professional accountant, there is a integrity, objectivity, professional competence, even a confidentiality and professional behavior as well, which new students built up in their self while study in accounting profession. But on the other hand, if the buyers required that the latest technology related to softwares, ERP or supply chains, business processes, even policies awareness, and last but not the least, the good report writing and presentations that help them to make good strategic and financial decisions. So do you feel that Pakistani accounting service exporters feel any difficulty in complying to these standards, or are we fine with on that area? No, as far as code of conduct of professional accountant, we have ECCA and ICAP that provide a professional code of conduct accountant. It is not necessary. But as far as compliance of ERP or software knowledge, we are much far behind our neighbor countries like India or Bangladesh or especially Sri Lanka. We have to work strategically on these softwares and ERP. Even if we can say that busy accounting or Zoho accounting, it's a software name that India built and are generally accepted in Middle East, USA as well. But our softwares are now gradually acceptability is gradually increased in another country. That's why we are far behind, slightly far behind with another country, especially rival countries. So which country do you think, you mentioned India, so do you think India is a rival in accounting services, or any other countries that you can think of? It is the main rivals, India, Bangladesh and Sri Lanka. Sri Lanka is also very great rivals because they are very much in advance in software developments and technology development. And we also develop softwares like Afrotex, Tech3 Technos. These are the companies that are providing a well level of accounting softwares and providing to those industries that and are generally acceptable for these countries, but are not at international level. That's why we are telling that we are far behind slightly. Okay, so in connection to that, if we come on to trade, so we looked at the data published by the State Bank of Pakistan, and that shows that Pakistan's exports of accounting, auditing, bookkeeping, and tax consulting services were around $42 million in FY21. So what do you think has contributed to this number? $42 million is very remarkable approach in Pakistan, especially during the COVID season. Actually, in Pakistan, accounting and bookkeeping and payroll processing and US-based tax consulting services are being provided by our offshore service provider. It is a thrice win-win-win situation. Client get cheaper services from us compared to their own market region. We get international clients, international exposure, knowledge and foreign remittance. That is very important for the government as well. And the employee get foreign work exposures plus handsome salary due to the foreign exchange rate. For most business, cloud-based accounting systems lends obvious advantage in supporting remote accounting firms. Cloud-based accounting system. Yes. Okay. So you think that Pakistan's competitive advantage in these services is cheap labor, or is there any other strength that we have?
Yes, in Pakistan, mostly service provider are not providing a remote CFO or finance level services to international clients. They are main focus on bookkeeping, payroll processing, US-based tax consultancy. It is the initial level, but I hope that these services like remote CFO and finance manager to international clients, like we should say the name of Crossover. If you see the website of Crossover, they are providing finance managers, CFO, even CEO level to the offshore clients. And we are still providing a bookkeeping, payroll services. It is acceptable at this stage, but we hope that we move forward to gain more success. So how do you think we can tap into such value added accounting exports? Any recommendations or suggestions that you can think of? Value added, we should work on social media for brand awareness. First of all, we should develop our own websites that shows who we are and what we are doing and what services we are offering, and how competitive we are to another, and what are special our pricing criteria. It is very important to for successful or to tap the international market. Even we can also write a blog that is relevant to the international market buyers. For example, we can say that what wet level blogs or international gap analysis level blogs. It is very informative, and the others the buyers वो required करते हैं इस तरीके की blogs read करने को. So yeah, आपके ख्याल में awareness is the first and biggest step that we need. Because I think there is no obstacles, there is no barriers to provide these services to international market. Even we have only one barrier, or we can say that it is can we say it is a barrier. We have no PayPal services, and it is a secure level of system to receive international market, to receive fund from international market. That is main cause for these remittance are very low level. So there's an issue in the payment system, you're saying? Yes, we have a Payoneer. Payoneer is also play an important role of receiving international payments. But it is that we are still waiting for the PayPal, and inshallah, if Pakistan go out from the FATF playlist, and the PayPal, I hope that the PayPal will be available in Pakistan, and our remittance from remittance will be increased from 42 million to 100 million, inshallah, within 2 or 3 years. Inshallah. So if we talk about export destinations, so कुछ तो traditional markets हैं which Pakistan is exporting to right now, which are USA, UK, and so on. Do you think that there are any other markets that we can provide our accounting services to? What markets can these be? International market, we have a US, UK, and China, and we provide these accounting bookkeeping services to them because we usually travel to there and reside there and are very much familiar with their regulatory requirements. And even our supportive countries or companies are also available there to join or collaborate with them. But we have less market in Middle East level. UK, Bahrain, US, Qatar, Dubai, and Saudi Arabia. We have to focus in these market as well. But why not? We are not focus on these areas. Even we are also. So how do you think that we can tap into these markets? एक तो चले आपने awareness का बोल दिया, we have to increase awareness. Any other thing that you can think of how we can go into these markets and export here? अब इसमें ये जो है आप सोशल मीडिया अवेयरनेस होनी चाहिए. We have to learn from social awareness to brand visibility and their eyes.
or blogs writing and website development is very important, or especially email marketing. I forgot to say in previous level. Email marketing is very important. We have to collect the data from middle level, CEO level or director level on our database, and send our flyers, our services level, our letters by post or by email, so that they can see that what they are providing, and I hope that they will call you and accountant to get these level of services. Okay, ठीक है. So if we move on to government policies, what sort of policies are currently being provided by the government which support such services? Are you aware of any? I am very happy with government because government provide all services, high speed level services, high internet speed level services, and remittance are only 1% taxable. And even if it makes softwares or IT level services, then it is fully exempted. Now the ball in our court how to market our products or services to the international level, so that the international remittance or international awareness of our services will increase. But it is only on PayPal is one main thing that should be introduced by the government, and inshallah it will be available. Okay. So summing up our discussion, if you were to list 5 major issues that accounting services exporters in Pakistan face, and 5 solutions on how we can tackle these issues, what would those be? Again, there is no issues faced by the accounting services exporter, and all are the solutions are in our court, not the government level court. We have international accounting bodies, ACCA, which is internationally and the largest international accounting bodies, and providing and producing a number of accounting in Pakistan, and IFA, SEMA, and these are the government benefits that allow these bodies to in Pakistan and provide produce fresh accounting at international level. Further, they provide internet services. Or no tax on our accounting services. Even 1% tax is recently imposed on our services. We are all in our court, not in government level. Okay, so you're saying that there's effort needed from the exporter side, increasing awareness and everything to increase our export. Okay, so that's it from my side. Samir Saab, if you have any questions, please. Thank you so much, and such a pleasure to find somebody who's optimistic about the trade. एक सवाल ये था कि हमने देखा कि 2 तरह की अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर. एक तो वो बिग 5 या बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं जो सर्विसेज अपने ही ऑफिसेस को प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनका एडवांटेज ये होता है कि उनके पास अपने हेड ऑफिस से सॉफ्टवेयर आया हुआ होता है और सारा जो है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं जो ग्लोबली फॉलो करते हैं. तो उनके लिए तो कोई मेजर इशू नहीं है बड़े क्लाइंट्स को टैप करने का, तो उनके बड़े क्लाइंट्स भी इन्हीं के एफिलिएट्स के साथ डील कर रहे होते हैं. सो जो शुरू में आपसे डिस्कशन से मैंने जो आइडिया लिया है, एंड आई मे बी रॉन्ग, कि जो नॉन अकाउंटिंग फर्म्स की जो एक्सपोर्टर्स हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, वो ज़्यादातर या तो एसएमईज के साथ डील करते हैं या इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, making their accounts and keeping their thing. Is my understanding correct? बिल्कुल करेक्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग है. असल में 2 तरह की अकाउंटिंग नहीं है, 3 तरह की अकाउंटिंग है. एक तो जो मेजर फर्म्स है जैसे कि आपने बताया, दूसरे सेकंड लेवल पे हम लोग आते हैं जिसमें सिर्फ अकाउंटिंग सर्विसेज और ऑडिटिंग सर्विसेज और सर्विस लेवल एट कॉर्पोरेट लेवल प्रोवाइड कर रहे होते हैं. और थर्ड लेवल पर आते हैं फ्रीलांसर. ये फ्रीलांसर्स जो होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा रेमिटेंस जो है ना लेकर आ रहे हैं वाया फाइवर और अपवर्क लेवल पर, क्योंकि इनको अभी यही 2 प्लेटफॉर्म मिले हैं. और इवन अब तो अपवर्क और फाइवर ने जो है इनको एक और बेनिफिट दे दिया है कि आप एज अ टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं अपनी. तो व्हाई नॉट ये जो है वहीं पे बैठ के काम करके
फॉरेन रेमिटेंस मंगा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है, उनको एक हेडसम लेवल पे जो है ना एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। प्लस जो है जो अपना सॉफ्टवेयर की बात की, तो उसमें सॉफ्टवेयर में ये है कि यहाँ पर अभी इस लेवल के सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम 2019 to 20 लेवल, और अब जो है ये एक्सेप्टेबल है। अब जैसे कि हम लोग भी एज अ चैनल पार्टनर्स हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनी के, और हमने भी जो है यूके और यूएस पे जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को प्रमोट भी किया, और वहाँ पे जो है वो बाकायदा जो है उनको वहाँ पे इंटीग्रेट भी किया उनके सॉफ्टवेयर लेवल पे, क्योंकि क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, और इंटरनेशनल लेवल पे अब डेस्कटॉप लेवल अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा। तो हमारा फोकस जो है वो क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर होता है, जिसमें खासतौर पे जो है उसकी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जो इंटीग्रेट हो डिफरेंट मॉड्यूल्स में, चाहे एचआर लेवल पे है, प्रोडक्शन लेवल पे। सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देने से जो है वो एक एसएमई लेवल पर रहता है, मगर अगर जो है अगर उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो तो फिर वो एक बिग लेवल पर जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है। तो जो आपकी जो बात है कि वो 4-5 कंपनीज जो दे रही हैं, वो सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं दे रही, वो जो है वो ईआरपी पूरा दे रही है। तो हमें जो है ईआरपी के ऊपर अगर ज्यादा काम हम फोकस करेंगे, तो विद इन 3 to 5 years जो है हम भी एक्सेप्टेबल, हमारे भी दूसरे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनकी भी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सेप्टेबल होंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी से पे एक दूसरा सवाल आता है कि एचआर की जो अवेलेबिलिटी है लोकली, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? जो इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं या जो एसीसीए आईकैप से आ रहे हैं, क्या होना चाहिए कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, रादर देन इस वक्त हम काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या हमारा एचआर और हमारा टेक्नोलॉजी बेस इस लेवल का है कि हम नेक्स्ट लेवल पे खेल सकें? एचआर लेवल से मुराद आपकी जो है वो अकाउंटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं कि जो है अकाउंटिंग स्किल्स की बात करें, अकाउंटिंग असल में स्किल्स की बात। जो हमारे जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं वो क्वालिफाइड और फ्रेश फाइनलिस्ट लेवल अकाउंटेंट जो है वो तो मार्केट में आ जाते हैं। मैं भी क्योंकि मैं इंटरव्यू करता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स का, तो मुझे जो मेन जो चीज़ों की कमी नजर आती है, चाहे वो क्वालिफाइड हो या फाइनलिस्ट लेवल अकाउंटेंट हो, न्यू हो या थोड़ा सा 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके पास जो मेन चीज़ की कमी होती है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अवेयरनेस नहीं होती। प्लस जो है एक्सेल बेस्ड उसकी एडवांस एक्सेल बेस्ड स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं होती। तीसरी जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन या वो जो है आप कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है वो लो होती है। अगर ये 3 चीज़ें जो हैं, अगर ये अकाउंटिंग बॉडीज या जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये स्टडी करवा रहे हैं, ये इसके अंदर एक 6 महीने या 3 महीने का सेशन रख लें और इसको मैंडेटरी इसको रिक्वायरमेंट बना लें, तो फिर जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स आएंगे ना फिर वो बिल्कुल पॉलिश होंगे, क्योंकि इन 3 चीज़ों से उनकी जो चीज़ है रॉ फॉर्म की जो अकाउंटिंग नॉलेज है वो जो है वो पॉलिश हो जाएगी, और फिर बात करने में भी मजा आएगा, काम करने में भी मजा आएगा, और किसी जगह भेजने में भी मजा आएगा। तो जो इस वक्त आ रहा है आउटपुट, अभी हम क्या एज्यूम करते हैं कि यही इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, इस पे अगर आपके पास कोई हायर होता है तो उस पे कितना टाइम लगाना पड़ता है आपको? देखिए, अगर जो न्यू होता है वो तो फिर जाहिर है वो तो उसको फिर हमें इंटर्नशिप पे ही लेना होता है, और फिर उसको बाकायदा किसी के अपने सीनियर लेवल के साथ लगाना होता है, मगर वो सीनियर लेवल के साथ भी उस वक्त तक लगा रहता है जो काम उससे लिया जाता है। समझे, अगर कोई ऑडिटर्स है तो सिर्फ ऑडिट की उससे रिलेटेड उससे स्किल्स दी जाएंगी, उसके साथ लगा दिया जाएगा कि भाई तुम ये चीज़ें सीखो। मगर क्योंकि ये 3 चीज़ें जो है ये किसी चीज़ की पाबंद नहीं है, चाहे वो एक्सेल हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो, तो ये 3 चीज अगर स्किल्स होती वो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, उसको टाइम नहीं लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, बहुत ही फ्लेक्सिबल वहाँ पे राबिया, आवाज आ रही है? आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू हो रहा है। आपकी वीडियो अटक गई है हसीब साहब। जी हसीब, we can see you now, we can hear you। बीच में आपकी वीडियो अटक गई थी, फिर अटक गया। फिर अटक गया। I think is he joining now? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? अब सही आ गया, बिल्कुल हैंग हो गए थे आप। मैं यही सोचा था कि अगर ये क्वालिटी है हमारी इंटरनेट की तो हमारा क्लाइंट तो परेशान हो जाए भाई।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें होती है, मगर ये कि आप यहाँ पे भी तो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, आप जिस हिसाब से भी लेना चाहें, प्लस जो है नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है और यूसेज के पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो मुझे एक बात बताएं कि जो हमारे मुल्क में सर्टिफिकेशंस होती हैं या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है एसीसीए के अलावा? बिल्कुल ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, मगर एसीसी की बात अगर डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है एक इंटरनेशनल बॉडी और लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। मैं इस वजह से इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं एसीसी खुद हूँ और नहीं फेलो नहीं, मेंबर मैं हूँ। तो दोनों नहीं हूँ ना, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, आप बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एसीसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में तो वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीए हैं, और मगर इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो फिर वो सब इक्वलेंट लेवल पर आ जाता है कि सीए, आईसीए, डब्ल्यू, एसीसीए, फिर आओ उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल जो है ना वो बराबर के करीब आ जाती है। यहाँ पर जो है वो आप एसीसीए जो है ऑफशोर लेवल पर अगर काम करता है तो फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। सो ये एसीसी के पास कोई प्रोग्राम है कि आपकी नॉलेज अपडेट होती हो रही है एवरी ईयर, या कोई कोर्सेज करने पड़ते हैं? एसीसीए जो है वो अपने कोर्सेज जो है ना वो फ्रिक्वेंटली जो है ना वो चेंज करता है टू मीट द इंटरनेशनल लेवल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बाकी सारे सीए भी करते हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ अपडेट रेगुलरली अपडेट नहीं होंगी तो फिर ये जो है फिर क्वालिफिकेशन होने का फायदा नहीं होगा। फिर जब जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को जो है ना कोने पे खड़ा हुआ सब महसूस करेंगे। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने क्विक बुक्स का जिक्र किया, और पाकिस्तान वी यूज दीज टू बिल्ड, और हम अपना भी कुछ डेवलप कर रहे हैं? क्विक बुक जो है वो देखिए यूएस में और खासतौर पर मिडिल ईस्ट लेवल पर जो है ना वो ज्यादा यूज होता है, क्योंकि अब ऑफशोर की बात हो रही थी, हमारी अकाउंटिंग सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात हो रही थी, तो मैंने क्विक बुक का नाम इस वजह से लिया क्योंकि सबसे ज्यादा जो ना यूज होने वाला क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, प्लस इसकी इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है पेरोल सिस्टम से, डिजिटल पेमेंट्स भी आसानी से रिसीव हो जाती हैं। इवन हम भी जो है वो क्विक बुक ही यूज करते हैं यहाँ पर। मेरे पास कोई अकाउंटेंट नहीं होता यहाँ पर बैठे हुए, ऑटोमेटिकली रिकरिंग बेस पे जो है हो जाती है, इनवॉइस जाती है, पेमेंट ऑटोमेटिकली बैंक्स में आती है, उनके पास हर चीज ऑटोमेटेड लेवल पर हो रही होती है। तो फिर आपको अकाउंटेंट की इतनी जरूरत ही नहीं होती, बस कुछ लेवल पर जरूरत होती है जहाँ पे आपको ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा हों। तो अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो यू रेकमेंड टू देम कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, कि वो उनके सॉफ्टवेयर पे फिर आप आउटसोर्स कर देता है तो आप उस पर वर्क कर लेते हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 11 साल हो गए हैं, अभी काफ़ी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के ऊपर लर्निंग भी हो गई हमारी। तो क्लाइंट जो भी सॉफ्टवेयर वो बोलता है हम उसको उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता और वो मैनुअल से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा होता है तो मेनली हम जो है वो क्विक बुक के ऊपर देते हैं, प्लस जो है पाकिस्तान के भी हम कुछ कंपनीज के चैनल पार्टनर्स हैं उसको भी रिकमेंड करते हैं। सब अपनी कोटेशन देकर, सब अपने डेमोज वगैरह देकर जो भी क्लाइंट्स को पसंद आता है वो फिर हम उससे कर लें, क्योंकि हमारा जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस लेवल पे कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने के लिए दे दिया जाए तो हमें सिर्फ कुछ टाइम लगता है उसकी अंडरस्टैंडिंग में, बाकी सारी चीजें प्रोग्रामिंग सेम होती है। सॉफ्टवेयर डेवलप किया है किसी पाकिस्तानी कंपनी ने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं नाम लेता हूं तो मैं एफ्रोटेक का नाम दूंगा। एफ्रोटेक बहुत अच्छा काम कर रही है, खासतौर पे इस जो है एचआर लेवल सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इसको अवार्ड भी मिला है जो ईयरली बेसिस पे या 5 ईयर बेसिस पे जो अवार्ड मिलता है पाकिस्तान से। प्लस जो है यहाँ पे 3 टेक्नो है, उन्होंने भी अपने 2 साल 2.5 साल पहले काम किया, उनकी भी ज़ाहिर है पीछे पास्ट एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर से, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस मैं नाम लूंगा एक इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर का भी, वो बिजी, जो कि बग्स बिजी फ्री भी? बिजी इवन, तो ये जो है बग्स फ्री है और बड़ा यूजर फ्रेंडली है। इवन डेस्कटॉप इसका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप विंडो यूज कर रहे हैं। ये बहुत और सबसे बड़ी बात तो ये कि इसकी फाइल साइज बहुत छोटा होता है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करता है। इसमें आप तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम भी आ गया इनके, तो ये भी बहुत जनरली एक्सेप्टेबल है खासतौर पर मिडिल लेवल पर। Rabia, anything else? I think that's it. Thank you for the information session. It was very Thank you, insightful. Haseeb. Thank you so much. Thank you, आपको Samir. हमारे बारे में राबिया ने कुछ बताया नहीं है। I don't know whether you know have heard about us. मैंने आपकी वेबसाइट वगैरह देखी थी और काफी मैंने रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह मैंने देखे, उसको स्लाइटली मैंने उसको रिव्यू भी किया, और अभी आप सेशन खत्म हो जाता है तो फिर मैं दोबारा भी देखूंगा। मगर अगर आप लोग अपना अपने तौर पे बताना चाहते हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप बताइए प्लीज। राबिया, स्टार्ट करोगे? तुमने शुरू में नहीं बताया। You're missing out part of the interview.
Okay. So Pakistan Business Council basically is a business policy advocacy platform. और हमारा basically we have 87 member companies and हमारा एक key thrust है Make in Pakistan, जिसका मैंने email में वैसे mention किया था, but I'll tell you about it. उसमें we look basically Make in Pakistan aims to focuses on value-added exports in Pakistan, import substitution, which leads to job creation. So based on that, हम फिर focus करते हैं on manufacturing, agriculture, and also the services industry. तो services industries के अंदर अभी हमने एक general services exports के बारे में एक report publish की थी, जिसमें we highlighted the need for Pakistan's need to increase its especially IT services exports, and then इसमें business services भी आ जाती हैं. तो now अब हम इन sectors पे focus कर रहे हैं. तो एक sector जैसे हमारा IT हो गया, उस पे भी हमारी एक report चल रही है. एक business services sector है जिसमें यही accounting services आ जाती हैं, engineering services आ जाती हैं, ये सब हैं. तो इस पे भी हम focus कर रहे हैं. And then we publish reports on these sectors for business people or the government or any other ministries or any other relevant stakeholders, and then we provide recommendations for these ministries, associations, or any other relevant stakeholder. So that's what we do in a nutshell. और इसी से रिलेटेड फिर हम आपसे यही इंटरव्यू जो हम लेंगे, फिर उससे हम जो इनसाइट्स गैदर करेंगे, बाकी सारे इंटरव्यूज लेके उस पर हमारी रिपोर्ट पब्लिश होगी इंशाल्लाह वेरी सून. एंड हम फिर वेबिनार भी होल्ड करते हैं अपनी रिपोर्ट्स लॉन्च करने के लिए, तो यू कैन ऑब्वियसली जॉइन दैट एज वेल. तो इट वुड बी नाइस टू हैव यू देयर एज वेल. तो ये रिपोर्ट आपकी कब तक पब्लिश हो जाएगी? आप अभी तो इंटरव्यूज चल रहे हैं. we've taken like 6 to 7 इंटरव्यूज और डेस्क रिसर्च हो गई है. तो इसके बाद फिर अभी तो हम एम करें कि रमजान से पहले इंटरव्यूज हो जाएं. फिर उसके बाद ये सारे इंटरव्यूज को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे रिपोर्ट में, एंड इंशाल्लाह आफ्टर रमजान इट शुड बी डन. सो बेसिकली जो हमने सर्विसेज सेक्टर को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान में बायस जो है ना वो सारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है और उसमें भी टेक्सटाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है. सो हमने रियलाइज किया कि 65% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज इन सर्विसेज. जीडीपी इज सर्विसेज, और सर्विसेज सेक्टर इज वन सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा रही है एज कम्पेयर टू दी गुड सेक्टर. सो कोशिश ये थी कि कम से कम लोगों की एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करने की ज़रूरत है. हम जब बात करते हैं तो स्टेट बैंक से बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं जी कि पैसे तो पाकिस्तान में आते ही नहीं है. पैसे पाकिस्तान में इतने आते हैं कि जो खर्चे हैं ऑफिस के वो पूरे हो जाएं, बाकी पैसे मुल्क से बाहर ही रख लेते हैं. तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें? तो मैंने कहा भाई कम से कम जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो टैक्स तो देते हैं ना. ऐसी बात तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में अगर उनके 1000 एम्प्लॉइज हैं तो 1000 एम्प्लॉइज को लिफाफे में वो पैसे दे रहे हैं. तो वाई आर यू लुकिंग एट दिस कि उन्होंने पैसे बाहर रख लिए या उन्होंने पैसे पाकिस्तान में नहीं ला रहे? तो नहीं लाने की भी कोई वजह होगी. ऐसे नहीं है कि वो नहीं ला रहे इसलिए कि उन्होंने बस हैरिट्स पे एक मकान लेना है. तो वो काफी आर्ग्यूमेंट रहती है इनके साथ कि हम यही कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, यू कांट इग्नोर दिस. आपका जो जनरल ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स है वो इम्प्रूव होती है. इनको सपोर्ट करने के लिए आपका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, बहुत सारी चीजें अपग्रेड होगी. आप सिर्फ ये मत देखें कि पैसे कितने आ रहे हैं, क्योंकि वो पैसे भी 1.5 बिलियन तो क्रॉस कर चुके हैं हम अब 8 मंथ्स के अंदर ना, 7 मंथ्स के अंदर. तो वो पैसे आ रहे हैं. अब समझाना बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद में लोगों को कि अगर पैसे नहीं भी आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि वो एक हमारा क्लाइंट था, वो बता रहा बोल रहा है कि भैया प्रॉफिट तो हमें नजर आ रहा है मगर बैंक के अंदर पैसे नजर नहीं आ रहे. तो समझाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि भाई प्रॉफिट तो नजर आ रहा है बैलेंस के अंदर मगर बैंक के अंदर पैसे वो समझते हैं इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट होने चाहिए वो बैंक के अंदर. नहीं ऐसे नहीं होता. इनको समझाना मुश्किल काम है. थैंक यू सो मच हसीब. थैंक यू. ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.